What is a coordination number? Coordination number, this will understand through some example. If we look at the crystal of NaCl, you can see this on YouTube also. A lot of videos are available which will tell you about the three-dimensional structure of NaCl. So you can see here that each NaCl is surrounded by 6 Cl minus ions. Similarly, each Cl minus is surrounded by 6 Na plus ions. So we can say here that here the coordination number of Na is 6. Similarly, coordination number of each Cl minus is also 6. So how do we define coordination number? Coordination number is defined as the number of oppositely charged ions present as nearest neighbors around that ion in an ionic crystal. Now let us see the factors which affect the formation of an ionic bond. So first factor is ionization energy. Now as you know that in the formation of an ionic bond you have a cation involved and you have an anion involved. So definitely formation of ionic bond will depend upon formation of this cation and formation of this anion. जितना ज़्यादा इनका formation fast होगा ionic bond उतना ही strong बनेगा. Now formation of cation, how it occurs? Suppose you have an atom A. So whenever you are removing the electron from the outermost orbit of a isolated gaseous atom, so this loss of electron results in the formation of a positive ion, or which we call it as cation. So in this process energy is absorbed. So formation of cation will depend upon this energy that is being absorbed during this process. So greater is the ionization energy, means greater is the energy required to remove this electron, difficult will be the formation of cation. So we can write greater is the ionization energy, difficult will be the formation of cation, or we can say that slower will be the formation of cation. So for a rapid ionic bond formation, ionization enthalpy should be low. So first factor which is affecting ionic bond is ionization enthalpy. So for a rapid formation of ionic bond, ionization enthalpy should be low. Now second factor which is affecting formation of ionic bond, as you can see, is the formation of anion, and tendency of any element to gain the electron is called its electron affinity. So how do we define electron affinity? Electron affinity is the energy released when an electron is added to a isolated gaseous atom to form a negative ion. So for example, suppose you have an element X. So if you are adding electron in the outermost shell of this again isolated gaseous atom, so it accepts this electron to form an anion, and in this process energy may be released, energy may be absorbed, but usually energy is released. So greater is the energy released during this process, faster will be the formation of anion. We say that higher is the electron affinity, faster will be the formation of anion. Now for example, if we can see here for ionization enthalpy, then we can see here that when we go down the group, the ionization enthalpy decreases. Ionization enthalpy decreases means tendency to form cation increases. So if we look at the tendency to form cation, so we can write here that if we look for group 1 element, then cesium 1
will have the highest tendency to form cation, then rubidium, then potassium, then sodium, and then lithium. So this will be the cation formation tendency of different metal. Similarly, as you might be knowing that chlorine is having the maximum electron affinity, followed by fluorine, then bromine, and then iodine. Okay, so greater is the tendency to form the anion, more energy will be released and faster will be the formation of ionic bond. And I hope you might be knowing the reason why chlorine is having high electron affinity as compared to fluorine. Why the tendency to accept the electron for chlorine is greater as compared to fluorine. Just let us reason this out. In case of fluorine, you can see the outermost orbital which is accepting the electron is 2p5. In case of chlorine, you can see the outermost orbital which is accepting the electron is 3p5. Now since 2p, if we see the distribution of electrons, it will be like this. In 3p also, the distribution will be like this. Now if you can see here, this will be accepting the electron in 2p orbital, whereas this will be accepting the electron in 3p orbital. Now since 2p is small in size, so since this 2p orbital is small in size, therefore when we are adding the electron, this electron faces the electron-electron repulsions. Whereas in case of chlorine, if we see, the size of 3p orbital is slightly greater as compared to 2p, and the incoming electron faces less electron-electron repulsion. So since it faces less electron-electron repulsion, therefore the addition of electron is more favorable or more easier process as compared to fluorine. So that is why chlorine is having a higher electron affinity as compared to fluorine. Now the third factor which is affecting formation of ionic bond is lattice energy. Lattice energy is, suppose a cation in its gaseous state and an ion in its gaseous state, when they combine to form 1 mole of ionic solid, then the energy which is released in this process is called as lattice energy. So this lattice energy is again the energy released. So we can say greater is the lattice energy, faster will be the formation of ionic bond. Or we can say greater is the lattice enthalpy, greater is the stability of ionic solid. Lattice energy is the energy released when 1 mole of ionic solid is formed from its gaseous ions. So for example, suppose we have this NaCl in the gaseous state plus Cl minus in the gaseous state. So from this to this. Now so we are moving from this stage to this stage. So the change in energy which is required to move from here to here, that is called as lattice energy. So lattice energy for this reaction, delta U लिख सकते हैं, we can also write it like delta H lattice. So this is minus 771 kilojoule per mole. So you can see here that for formation of 1 mole of ionic solid of NaCl, 771 kilojoule of energy is released. So I hope you know that this negative sign means that this is a exothermic process and energy is released during this process. So we can summarize here that the favorable factors for formation of ionic bond, first is lowest ionization enthalpy. लोवेस्ट क्यों? ताकि जल्दी से कैटायन फॉर्म हो जाए. सेकेंड इज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और वी कैन से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. वाई हाईएस्ट? ताकि जल्दी से एनायन फॉर्म हो जाए. थर्ड, हाईएस्ट लैटिस एंथैल्पी. वाई? क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ही जल्दी ये आयनिक सॉलिड फॉर्म होगा,
उतना ही फास्ट यहाँ पे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. सो दीज थ्री फैक्टर्स फेवर द फॉर्मेशन ऑफ any ionic bond. Now to determine the lattice enthalpies, we use one cycle called as Born Haber cycle. तो Born Haber cycle क्या है उसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे. Now suppose we are taking formation of 1 mole of ionic solid Mx, where M is the metal and X is the halogen. तो हमें पता है कि जो मेटल है वो अपनी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, whereas जो हेलोजन है वो अपनी डायटोमिक फॉर्म में गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है. सो जब भी 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड बनेगा स्टार्टिंग फ्रॉम M एंड X, तो वो इस तरह से बनेगा और इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी कॉल्ड एज डेल्टा एच एफ नॉट. इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज या स्टैंडर्ड एनर्जी चेंज इन्वॉल्व ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड. बट अभी हमने पढ़ा कि कोई सॉलिड जब बनेगा तो वो किससे बनेगा? मेटल जब कैटायन बनाएगा इन द गैशियस स्टेट, प्लस जब हेलोजन आयनायन बनाएगा इन द गैशियस स्टेट. सो दे विल कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड. तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज इन्वॉल्व है दैट इज लैटिस एंथैल्पी, जिसको हम U से भी शो करते हैं. अब ये तो हो गया डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन. डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन क्या मतलब हुआ? एलिमेंटल स्टेट से आयनिक सॉलिड का बनना. और लैटिस एंथैल्पी क्या है? कैटायन और एनायन गैशियस स्टेट में जब आ जाते हैं और इनसे 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड का बनना, दैट इज कॉल्ड एज लैटिस एंथैल्पी. नाउ वी नो ये जो मेटल सॉलिड है इट विल फर्स्ट फॉर्म मेटल इन द गैशियस स्टेट और फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा टू फॉर्म मेटालिक आयन. नाउ वी नो इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन एंथैल्पी. ठीक है, और यहां जो एंथैल्पी इन्वॉल्व है उसको हमने क्या बोला है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ये जो हमारे पास हेलोजन है फर्स्ट दिस विल अंडरगो डिसोसिएशन टू फॉर्म X इन द गैशियस स्टेट और यहाँ पे जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी दैट विल बी कॉल्ड एज डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन. एंड देन दिस X will add up 1 electron to form this X minus और जो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व होगी दैट विल बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ठीक है, तो ये एक साइकिल सी बन गई है और इसी को हम बोलते हैं बॉर्न हेबर साइकिल. बॉर्न एंड हेबर आर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. ओके, सो इस साइकिल का नाम क्या है? बॉर्न हेबर साइकिल. अब इस साइकिल से आई कैन राइट इट दैट डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन यानी कि जो नेट एनर्जी चेंज है ये किसके बराबर है? इन सबके सम के बराबर है. ये हमारा एक हेस्ट लॉ आता है जो कि आप पढ़ोगे. हेस्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई केमिकल चेंज एक स्टेप में हो रहा है या 5 स्टेप में या मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है उसका जो टोटल एनर्जी चेंज है वो सेम रहेगा. इसका मतलब अगर ये चेंज सीधा हो रहा है या घूमकर हो रहा है, दोनों ही रास्तों से जो भी हमारा नेट एनर्जी का चेंज होगा वो बराबर होगा. डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन जो है इट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस लैटिस एंथैल्पी. नाउ फ्रॉम दिस वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी. दिस लैटिस एंथैल्पी is equals to K into Q1 into Q2 divided by upon R square, where Q1 and Q2 are the charges on ions जो कि हमेशा equal and opposite होंगे. ठीक है, और R क्या होगा हमारा? distance between the ions. So from here you can see that lattice enthalpy directly depends upon charge on ions and inversely depends upon distance between the ions, which is basically nothing but size of ions. ठीक है, so these are the two factors which are affecting lattice enthalpy. Now just to understand this effect of charge and size on lattice enthalpy, let us see here. Now suppose if the charge increasing as we are going from here to here, so you can see the charge increases but the size is same. So as you are increasing the charges,
the forces of attraction also increases. Now since force of attraction increases, the lattice enthalpy will also increase. Okay, but when we are going from here to here, so you can see here the size increases whereas the charge remains the same. So when you are increasing the when you are increasing the sizes, so what will happen? The force of attraction will decrease. तो उसका मतलब क्या है कि जो lattice enthalpy है that will also decrease. So this is the effect of charge and size on lattice enthalpy. Let us see the variation of lattice enthalpy with the sizes. So if you can see here, जब आपके पास cation C of Li plus है and you are changing the anion, जब हम एनायन का इफेक्ट देख रहे हैं तो यू कैन सी हियर चार्ज सब में सेम है, बट अगर हम साइज की बात करें देन साइज इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आप देख सकते हो कि जो लैटिस एंथैल्पी है इट इज डिक्रीजिंग. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग में अगर आपने देखा हो, फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. ठीक है, तो हमने देखा कि लैटिस एंथैल्पी जो है दैट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन चार्ज. सपोज नाउ इफ आई गिव यू 3 मॉलिक्यूल्स NaF, MgF2 एंड AlF3, तो जितना ज़्यादा केटायनिक चार्ज होगा साइज उतना ही छोटा होगा. सो हम जैसे जैसे यहाँ जाएंगे तो यू कैन सी हेयर द साइज डिक्रीजेस. अब अगर ऐसे हम जा रहे हैं और साइज डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब लैटिस एंथैल्पी क्या करेगी? लैटिस एंथैल्पी विल इंक्रीज. ठीक है. सेकेंडली जो सेकेंड फैक्टर हमने बताया वो है हमारा साइज. नाउ सपोज इफ यू हैव इन दिस वी हैव सीन दैट लैटिस एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. तो इन दिस केस सपोज इफ आई गिव यू स्पीशीज लाइक LiCl, NaCl, KCl, RbCl and cesium chloride, तो you can see here size of cation increases. ठीक है, साइज बढ़ रहा है. अगर साइज ऐसे ऐसे बढ़ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि जो लैटिस एंथैल्पी है वो यहाँ पे क्या करेगी? डिक्रीज करेगी एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. नाउ देयर आर सम मेजर कॉन्सिक्वेंसेस of lattice enthalpy. Now what are these consequences? First consequence is greater is the lattice enthalpy, greater will be the stability of compound. इसका मतलब क्या हुआ कि जो lattice enthalpy है that is directly proportional to stability of compound. Second factor is that lattice enthalpy, देखो lattice enthalpy है solid की formation. ठीक है, जो सॉलिड को होल्ड करके रखती है, केटायन एनायन को होल्ड करके रखती है. जिस कंपाउंड की लैटिस एंथैल्पी जितनी ज़्यादा होगी उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसे कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी वाटर में उतनी ही कम होगी. क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी कब होती है पानी में? सपोज हमने एक सॉलिड लिया NaCl और इसको हमने डाल दिया वाटर में, तो क्या होता है वाटर में जाके कि ये जो Na प्लस है इसको वाटर के मॉलिक्यूल्स सराउंड कर लेते हैं, जो Cl माइनस है इसको भी वाटर के मॉलिक्यूल्स सराउंड कर लेते हैं और इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं, इन दोनों के बीच में गैप बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाती है और इसीलिए ये आयनिक सॉलिड पानी में डिसॉल्व हो जाता है. लेकिन अगर इनके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वाटर अपनी ये लेयर नहीं बना पाएगा, तो कंपाउंड डिसॉल्व भी नहीं होगा. इसका मतलब क्या है कि जिन सॉलिड्स के लिए लैटिस एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है उनकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी इन सॉल्वेंट. इसका मतलब क्या हुआ कि लैटिस एंथैल्पी जितनी ज़्यादा है स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी लेकिन सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं अबाउट लैटिस एंथैल्पी.